Okay, so we'll be discussing today problem solution essays, but problem solution essay is not the only essay that that students face problems in. There are three types of essays in problem solutions essay. Good evening. The first type of problem solution essay uh, uh, is about problem and solution. Second one is about cause and solution. And in this department or in this type of essay, there is also one more type of essay in which you're only required to give the solutions. I have heard, I have, got, messages from many of the students that we are not able to understand between the difference between problems and cause. And we are not able to identify whether this basically is a problem and solution essay. So I thought of taking this essay. This will, if you look at this, this will definitely clear out all your doubts as far as problem solution essays are concerned. Cause and solutions essay, and the third one is only the solution. And what I have done in this lecture is that at the end of this entire session, I have designed a template for all these three type of essays. So I have designed a template for problem solution, cause solution, and if at all you're only asked the solutions, then how you need to write. So I'll be giving you the template, at the end of the session once it, gets completed. So IELTS problem solution essays are the most challenging essay type for many people. The way they are worded, the wording will come to that part, in the next slide. But the way they are worded can very usually, which can make it difficult to understand how to answer the question. Generally, you will be asked to write about both the problem or cause and the solution to a specific issue. As I have told you, you will be having problem solution, cause solution, or you might be asked to write only the solution. Okay. Here it is essential that you analyze the question carefully, which I will show you how to do in this lesson. I'm going to demonstrate step-by-step method how to plan and how to write IELTS problem solution essay. Now listen to this very carefully. I want you people to take care of this. As you all know that writing is one of the most vulnerable sessions of your IELTS. Many times just because you are not able to understand the topic, will end up in getting 5.5 and 6 bands. अगर आपको कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए जाना है तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी. Okay, so we are going to take identifying problem solution essays, the mistakes that you are going to commit, that you basically are committing, the essay structure, how to plan out the essay, how to write an effective introduction, how to write main body paragraphs, and finally how to write in conclusion. So we are all going to cover each and every part of this in detail. And as I have told you before, I'll be giving you the template at the end of the session. Okay. The first, let us first of all understand the problem. Here are two typical IELTS problem solution essay questions. They consist of a statement followed by the question or instruction. So this is a typically problem solution essay. Let me read it for you. One problem faced by almost every large city is traffic congestion. What do you think the causes are? What solutions can you suggest? What type of essay is this, students? Can you help me out? What type of essay is this? Can you tell me? It's a cause and solution essay, isn't it? So you are required to give a cause. What are the causes of traffic congestion? And you are supposed to give the solutions of the same. So how you can do realize that it's a cause and solution? First, okay, just a minute. Yeah, first, this is the question. This is the statement. One problem faced by almost every large city is traffic congestion. And then this is followed by two questions. What do you think the causes are? What solutions can you suggest? Let me go to the another question. Since the beginning of the 20th century, the number of endangered species has increased significantly, and we have witnessed more mass extinctions in this period than in any other period of time. State some reasons for this and provide possible solutions. Since the beginning of 20th century का मतलब 20वीं सदी से beginning से काफी endangered species जो नाश होने की कगार पे है, वो species जो है वो लुप्त हो रही है. And we are witnessing more mass extinctions. Mass extinction का मतलब होता है एक साथ पूरी की पूरी species खत्म हो जाती है, उसको हम कहेंगे mass extinction. और वो इतना ज्यादा हो रहा है जो शायद आज तक पूरे अभी तक की दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है. So it is very important for you to understand that this is also, this is all. Can you tell me by reading the question, this is what type of essay is the second one?
state some reasons for this and provide possible solutions. What type of essay is this? Yes guys, what type of essay is this? It is the same as the first one, isn't it? It is the same as the first one. यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, देखिए यहाँ पे ही गलती कर देते हैं लोग. So I strongly recommend students that whenever it comes to question and prompt, एक बहुत पुराना चीज मैं हर वक्त हर सेशन में कहता हूँ जब मैं ऐसे लेता हूँ. I strongly advise students. Many of the students, are having examinations somewhere, after 10 days. मैं उन बच्चों को खास पॉइंट करके ये कहना चाहूंगा कि when you are in the examination hall, please read the essay topic for at least 4 to 5 times. अगर आपको देख के ऐसा लगता है कि ये तो बहुत easy है, I am now able to understand each and everything. Many a times even the most intelligent student commit blunders. So मैं recommend करूंगा उन लोगों को कोई भी ऐसे उसको 4 या 5 बार रीड करे. 4-5 बार रीड करने से आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या लिखना है. बिकॉज इवन इफ यू रिटन वेरी गुड, इफ यू मिस आउट, जैसे कि अगर कॉज एंड सॉल्यूशन है और अगर आपने कॉज नहीं लिखा, सिर्फ सॉल्यूशन लिख के आगे, तो सीधा 50, यू आर गोइंग टू बी ग्रेडेड आउट ऑफ 6 points. So this is going to be a mass cutting of marks. So please make sure of that part. Again, both this type of essays are cause and solution essay. जैसे कि यहाँ पे जो डायरेक्टली लिखा है कि what do you think the causes are, what solutions can you suggest, तो ये पता चल जाता है कि हमें cause और solution दोनों लिखने हैं. अब यहाँ पे भी देखो लिखा है state some reasons for this and provide possible solutions. cause का मतलब भी reason होता है. So again this is a cause and solution essay. Okay, now let me come. There are some examples of different ways in which questions can be phrased. The first half of the question relate to the problem or cause, the second half to the solution. Usually ऐसा होता है कि जो पहला जो half होता है question का is basically the question in which you are asked about the cause, and in the second half of the second part of the question is about the solution. जैसे कि देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है, what issues does this cause and how can they be addressed. तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सर यहाँ पे cause लिखा है लेकिन यहाँ पे can be addressed है, तो solution तो लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ही ये हुआ कि आपको solutions लिखने हैं. So you need to understand this. Okay, दूसरा, what are some result. मैं चाहूंगा कि ये बिल्कुल ध्यान से देखिए, and at the end of this you take the slide, screenshot of this, because you usually, many times, students send me the messages, sir इसमें क्या करना है मुझे, सर यहाँ पे लिखा तो है नहीं कि ये कॉज लिखना है, ये सॉल्यूशन, ऐसा कुछ डायरेक्टली लिखा तो नहीं, तो डायरेक्टली बहुत कम लिखा जाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस. व्हाट आर सम रिजल्टिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन वी डील विद देम. तो देखो पहला जो है व्हाट आर सम रिजल्टिंग सोशल प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने हैं, एंड देन हाउ कैन वी डील विद देम, वो उसका सॉल्यूशन हुआ. ओके, third one, what problems arise from this and how can they be tackled, and how can they be tackled. Is it getting clear? Okay, so it is very very important for you to understand that what problems arise from this and how can they be tackled. तो problem इसमें arise हुआ तो वो भी हो गया, ये how can they be tackled, तो ये भी solution हुआ. Okay, then दूसरा why is this, देखो सिंपल सा है. अब आप ये सोचोगे why is this, सर ये why is this में मुझे क्या करना है, तो ये why is this इसका मतलब you need to find out the cause and how might it be remedied. remedied का मतलब इसकी remedy क्या है, इसका solution क्या है. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, बिकॉज ये छोटी छोटी सेंटेंस आपको पता ही नहीं चलेगा. तो इसमें भी आपको यही करना है. इन द फोर्थ वन यू आर सपोज टू गिव द कॉज एंड यू नीड टू गिव द सॉल्यूशन. व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस एंड हाउ कैन द सिचुएशन बी इम्प्रूव, तो ये उसके सॉल्यूशन हुआ. So the first part is about the reasons, that is cause, and then the solution. Why is this happening? Again cause, and what measures can be taken to tackle this problem. So these are all very very important ways, and let me tell you, these are not the only ways, students. Let me warn you that these are not the only ways, but these are few of these ways by which you can be asked the question जिसमें problem solution है, या तो फिर cause and solution है, या तो फिर only solution. I wish you people take the screenshot of this. Yes, please take the screenshot of this slide. Let me know when you are done, because ये आपको पता चलेगा कि ये cause और solution में ऐसे भी ये बहुत important है. Why is this, ये confusing है. Why is this कैसे करना है. Okay, have you taken the screenshot everybody? Yes or no? Okay, great. Although there will be recording done to will be provided to you tomorrow, but don't worry, in case अगर आपको लिखना है तो ये कर सकते. Okay, now let us go ahead. And here are few questions which you only have to write about the solution. और ये ऐसे questions है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ solution लिखना है. आपको पूरा prompt दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये problem है, और सिर्फ आपको solution अगर लिखने हैं तो आपको ऐसे questions आ सकते हैं.
how can this solution be how can this situation be improved, what solutions can you suggest to deal with this problem, how can this problem be solved, what measures could be taken to prevent this. So these are the sentences that they could utilize where you're only required to write the solution. Any questions, any doubts, students? Yes, absolutely clear. पता चल रहा है आपको कि कैसे जा रहे हैं हम लोग? Yes, shall I go further now? Okay, great. Give me response. Okay. It is important that you are able to recognize the common synonyms, words and phrases used in problem solution questions. Here are the keywords and their synonyms used in the questions above. Okay, now I'll just come to that part afterwards. Don't worry. I'll just come. You just listen to this entire lecture, and I suppose that most of your questions will be solved. Jarul, don't worry. Okay, so the first problem है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर मुझे cause है या problem है? ये lecture ऐसा है, मैं सारे एसेस पढ़ा चुका हूँ और पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसके बाद भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रॉब्लम्स और कॉज में क्या प्रॉब्लम है, आई मीन क्या फर्क है. तो मैं चाहूंगा कि इसको वापस देखो. प्रॉब्लम में इश्यूज ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम के बारे में लिखना है. रिजल्टिंग है तो ये भी प्रॉब्लम है, और सिचुएशन है तो ऐसी अगर कोई चीज आती है तो आपको समझना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द प्रॉब्लम्स. कॉज है तो ऐसा पूछा जाएगा रीजंस या फिर वाई, जैसे कि क्वेश्चन था पहले, वाई इज दिस. सो यू कैन कम टू नो अबाउट बाय रीडिंग दैट यू आर सपोज टू राइट द कॉज. सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कैसे पता चलेगा, हमने पहले भी किया. डील विथ, कैसे डील करना है उसको. हाउ कैन दिस बी एड्रेस्ड, हाउ कैन दिस बी टेकल्ड, हाउ कैन दिस बी रेमेडिड, improved, measures taken, solved, prevent. So these are various type of words, and let me again warn you, these are not the only words. These are few of the words that you can I mean by reading them you can get to know that you are planning for going for problem solution or cause. Okay, now before we move on to some common mistakes, I want to quickly explain the difference between a problem and a cause. अब वापस आते हैं सॉल्यूशन को. सबको पता है कि सॉल्यूशन में क्या करना है. बहुत इजी है. सॉल्यूशन देख के पता चल जाता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द सॉल्यूशन. पर प्रॉब्लम और कॉज में क्या फर्क है? जैसे कि अगर ट्रैफिक है तो कोई मुझे बताने का कष्ट करेगा कि ट्रैफिक अगर है तो उसका ये, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो ट्रैफिक के मुझे दो चीज बताए. लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम. What are the problems that we face because of traffic? Yes, guys. What are the problems that we face because of traffic? चलो लिखना चालू करो. Write in your, in the chat box. Very good. It is, it causes noise pollution. Exactly. Okay. Yes. It's okay. It takes lots and lots of time. Very good. ओके तो ये उसके, हाँ, नॉइस पॉल्यूशन है और एयर पॉल्यूशन है. एग्जैक्टली. तो ये उसका प्रॉब्लम हुआ. आपके सामने ट्रैफिक तो है, रोड जाम है, उसका प्रॉब्लम हुआ. नाउ टेल मी द कॉज ऑफ ट्रैफिक. कैन यू टेल मी द कॉज ऑफ ट्रैफिक? कॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉज ऑफ ट्रैफिक. एग्जैक्टली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे व्हीकल्स है. एग्जैक्टली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. या वेरी गुड, यू पीपल आर गिविंग द राइट आंसर. तो देखिए, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो ये प्रॉब्लम है उसके. प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. एयर पॉल्यूशन, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्या है, तो आपको ऐसे में एयर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है. यू माइट बी राइटिंग दैट पीपल विल रीच लेट टू देयर वर्क प्लेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बट व्हेन इट कम्स टू कॉज, तो ये भाई ट्रैफिक होता है, उसका कॉज क्या है? देन यू मे बी राइटिंग देयर आर, बिकॉज ट्रैफिक किस लिए होता है, तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ व्हीकल्स है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके कारण ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण ये होता है. हैव यू, इज इट नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर नाउ कि आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड कॉज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये पता नहीं चलेगा यू विल फेस प्रॉब्लम्स. आप कहीं पे क्या करोगे कि कॉज लिख के आ जाओगे. अच्छे अच्छे होनहार बच्चे भी ये गलतियां करते हैं, सो वो जरा ध्यान रखना. ठीक है, ओके, वेरी गुड. चलिए, very nice that you people are understanding. And even if you're attending the lecture essay for the first time, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपको पता चल जाएगा. It's not that very difficult to understand. Okay, now these are the 6 mistakes that usually people commit. First and the foremost thing, or rather issues जिसके कारण, एक तो ये मैंने बताया कि people are not able to identify between the cause and problem, whether they need to write only solution or something.
दूसरा जो ब्लंडर करते हैं, मैं हर वक्त बच्चों को कहता हूँ, दे आर राइटिंग टू मेनी आइडियाज, दे हैव गॉट, जैसे कि अगर ट्रैफिक है तो उसमें तो हजारों आइडियाज मिल जाएंगे आपको इन ऑर्डर टू राइट, बट यू डोंट नीड टू राइट टू मेनी आइडियाज। अगर आपने ज्यादा आइडियाज लिखे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द स्कोर। आपने जो आइडिया लिखा है उसको डेवलप करना पड़ेगा, तो अगर डेवलप नहीं करे किया है तो वो तीसरा इश्यू है। ऑल्सो यू नीड टू डेवलप बोथ द साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट इक्वली। जैसे कि अगर प्रॉब्लम है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर राइटिंग अ प्रॉब्लम, यू आर डेवलप्ड इट प्रॉपर्ली, मतलब आपने अच्छी तरह से इसको समझाया कि ये प्रॉब्लम है, उसका एग्जाम्पल दिया, और सॉल्यूशन को बेचारे जैसे कि पता नहीं किस दुनिया से आया हुआ है उसको तो छोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं चलेगा। सो व्हेन आई से यू नीड टू डेवलप बोथ द साइड्स, मतलब अगर प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डेवलप किया है तो सॉल्यूशन को भी अच्छी तरह से डेवलप करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। यू कैन नॉट लीव एनी वन ऑफ देम आउट। If you do that, you cannot get a great score. So I repeat, you need to develop both the sides of the argument equally. So दूसरी important part, you are not linking the problem and solution. So आपने से ज्यादातर होता क्या है कि problem you write in the second paragraph and solution you write in the third paragraph. तो होता क्या है, जब आप प्रॉब्लम लिखते हो, अब जब सॉल्यूशन पे आते हो तब भूल जाते हो कि मैंने किस किस प्रॉब्लम के बारे में लिखा था, एंड देन यू राइट अबाउट द सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन जो लिखते हो वो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो प्रॉब्लम लिखा है उसका नहीं है, then also you are going to make commit a blunder. Are you getting what I am trying to say? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी चीज का देना है जिसका आपने प्रॉब्लम रखा हुआ है, सो दे शुड बी इंटर मैचिंग ईच अदर, एंड यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक इनफ, जैसे कि अगर आप जो प्रॉब्लम है तो उसको ठीक से बताना पड़ेगा, गोल गोल राउंड राउंड बातें नहीं करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी स्पेसिफिक. It is common for an essay to consist a list of problems and solutions without any of them being expanded or linked to each other. Sometimes a student will focus on just the problem or only the solution, which leads to an unbalanced essay. Both these issues will result in a low score for task achievement. मैंने वैसे बताया वैसे, अगर आप unbalanced essay लिखते हो, taking care of problem only or solution only, you're going to lose marks on task achievement. You must choose one or two problems and pick solutions directly linked to them. Explain them and give examples. मैं एग्जाम्पल पे भी आता हूँ, काफी बच्चे ऐसा पूछते हैं कि क्या मुझे सर एग्जाम्पल सब जगह देना पड़ेगा? I'll come to that afterwards. Another serious error is to write generally about the topic. You need to be very specific with your ideas. आपने मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि you need to bring come along with ideas out of the world, but you have to, your ideas should be very specific to the question being asked. Analyze the question, sorry. Analyzing the question properly is essential to avoiding this mistake. I will show you how to do this. First करो कि ये आपका ऐसे है. Let me okay. Now before I come to that part, let me explain you कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग. So you are going to write 4 paragraphs. All of you, please concentrate over here. You are going to write 4 paragraphs. The first is going to be introduction. First statement obviously is going to be paraphrasing. पैराफ्रेजिंग में आता हूँ, काफी लोग शायद नए हैं तो पता नहीं है. यू नीड टू राइट द सेम सेंटेंस इन सम अदर वर्ड्स. बाद में स्टेट वन की प्रॉब्लम एंड रिलेटेड सॉल्यूशन. तो आप इंट्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम भी बयां करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब इट, बट यू आर जस्ट गोइंग टू मेंशन द प्रॉब्लम. आई एम रिपीटिंग इन इंट्रोडक्शन, आई एम गिविंग यू द फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. ये जो है ये इसका फॉर्मेट है. बाद में मैं आपको उसका पूरा फॉर्मेट ऐसा दूंगा जिसका आप इस्तेमाल कर पाओगे. बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड. In introduction, you are going to write 2 or 3 lines. First is going to be paraphrasing the question, and in the second line, you are going to state the problem, and you're also going to state the solution. I repeat, you're only going to state them. You're not going to describe it, because वो describe करने वाली बात आप second paragraph में कर रहे हो. Here it is mentioned. Topic sentence करोगे, state the problem or cause. तो ये जो format है, आप problem और cause solution वाला ऐसे दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो. Then you need to give explanation, give detail explaining the problem of the cause. Example, if you are able to give an example, it is fine. Third, topic sentence, state the solution. तो जहां पे जो आपने प्रॉब्लम लिखा है या कॉज लिखा है उसी का सॉल्यूशन दिखना. मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि जब आप बॉडी पैराग्राफ 3 लिखते हो, मतलब बॉडी पैराग्राफ 2 लिखते हो, दैट मीन्स ओवरऑल ऐसे का पैराग्राफ 3, जब आप सॉल्यूशन लिखना चालू करो तो मैं चाहूंगा कि आप प्रॉब्लम जो या कॉज जो आपने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है उसको एक बार फिर से पढ़ लेना. देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी दैट योर सॉल्यूशन में गो इन वेवर्ड डायरेक्शन. अगर ऐसा ना करना है तो मैं चाहूंगा कि आपने जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है उसको 10 सेकंड लगते हैं रीड करने के लिए. सो जस्ट रीड इट आउट सो दैट योर सॉल्यूशन डज नॉट गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन.
and then followed by conclusion. So just understand this is a 4 paragraph structure. Okay, now मैं एक प्रॉब्लम लिखूं या दो एक सॉल्यूशन लिखूं. नाउ आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. काफी बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर मैं दो प्रॉब्लम लिखूं, दो सॉल्यूशन लिखूं, क्या करूं? क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि गिव यू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. मोस्ट क्वेश्चन विल स्टेट प्रॉब्लम्स, causes and solutions in the plural. मैंने जैसे बताया that is more than one. However, it is acceptable to write about just one. मैं आपको ये भी कहने वाला हूं कि अगर आपको दो लिखना है तो लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो वो भी मैं समझाऊंगा. But right now just listen to this. This will give you an essay of just about minimum 250 words. दो प्रॉब्लम और दो सॉल्यूशन लिख सकते हो, बट उसके लिए आपको काफी कुशल, you have to have very good skills. बिकॉज व्हाट वुड अदरवाइज हैपन, अगर आपने ऐसा लिख दिया, प्रॉब्लम लिख दिया और सॉल्यूशन लिख दिया, प्रॉब्लम लिख दिया, सॉल्यूशन लिख दिया, उस आइडिया को डेवलप नहीं किया, तो क्या होगा कि यू विल बी, योर मार्क्स विल बी डिग्रेडेड. और अगर आपने उससे सबको डेवलप करने गए, देन यू मे बी राइटिंग 300 to 400 वर्ड्स. तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे. तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके पास प्रॉब्लम, आई मीन अगर आप यू आर नॉट कंफर्टेबल राइटिंग टू प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्यूशंस, व्हिच आई थिंक यू शुड नॉट, then go for writing only one problem and one solution. It is better to fully develop one problem or cause and solution than ending up with one idea, missing an explanation or an example because you run out of time. तो पहला तो ये समझना है आपको कि एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन, या तो फिर एक कॉज और एक सॉल्यूशन लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, now let us try to understand this. This is an essay that we are going to discuss today. Please take a note of this. One problem faced by almost every large city is traffic congestion. For example, what do you think the causes are? What solutions can you suggest? First कीजिए कि हमें इसी ऐसे पे लिखना है. You are writing on this essay that एक ऐसा प्रॉब्लम है जो काफी बड़ी बड़ी सिटीज फेस करती है, वो है ट्रैफिक कंजेशन. What do you think the causes are? इसके causes क्या है? And what solutions do you suggest? तो पहले इसको देखो कि एनालाइज करना पड़ेगा, आइडियाज को जनरेट कीजिए. और मैं हर वक्त ये कहता हूं कि ऐसे लिखने से पहले उसकी वोकैबुलरी अपने नोट पे लिख दीजिए. मैंने देखा था काफी लोग मुझे ऐसे चेक करने देते हैं, तो they are writing the vocabulary in front of the essay. That gives me an idea कि लोग सोच के लिख रहे हैं. So it is important that you write the vocab at least on the question paper in your examination, ताकि आप वो vocab का इस्तेमाल कर सको. Okay, now analyze the question. This is an essential step in the planning process and will ensure that you answer the question fully. It is quick and easy to do. You just need to identify 3 different types of words. एक तो टॉपिक वर्ड्स, अदर कीवर्ड्स और इंस्ट्रक्शन वर्ड्स. याद रहेगा आपको, 3 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है. टॉपिक वर्ड्स, दूसरे कीवर्ड्स और इंस्ट्रक्शन वर्ड्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल, one problem faced by almost every large city is traffic congestion. तो ये जो आपका है, this is basically your main word, जिसके ऊपर पूरा essay is dependent on it. Many people will do this first step of the process and then write about the topic in general. ऐसा नहीं करना है. आपको समझना पड़ेगा कि one problem faced by almost every city is traffic congestion, लेकिन traffic congestion के बारे में मुझे क्या लिखना है? What do I need to do? तो ये है आपको. So one problem faced by almost every large city is traffic congestion. आप क्या कर सकते हो कि एग्जाम में when you got this paper in front of you, just mark the keywords. आपके जो ऐसे है उसके keywords को मार्क कीजिए. It will definitely make you out, make your life easier. और आप एक भी चीज मिस नहीं करोगे. You can mark on the question paper. Let me tell you students, अगर आपके पास IELTS का एग्जाम पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, उसको मार्क कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मुझे किसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करना है, और शायद कोई चीज रह नहीं जाएगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कमांड प्रॉम्प्ट. तो इसको देख के पता चलेगा कि आपको क्या करना है. इसमें ऐसा लिखा है कि व्हाट डू यू थिंक द कॉजेज आर एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट. तो कॉजेज ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिससे आपको पता चल रहा है कि यू आर नीड सपोज टू राइट अबाउट द कॉजेज, एंड फाइनली you are also required to write about the solutions. Now let us try to understand this. ये आइडियाज है. देखिए, जैसे कि अगर मैं क्या करूंगा, this is brainstorming that you need to do. See, in essay you are given 40 minutes. Everybody please concentrate. In an essay you are given 40 minutes, and all these 40 minutes, can you guess, students, how much, many of you are writing an essay? आप मुझे guess करके बता सकते हो, या तो फिर आपको तो पता ही होगा कितने मिनट्स में आप अपना essay लिख पाते हो. Guys, those who are writing, those who are not writing, वो guess कर सकते हैं. How many minutes does it take for you to write the entire essay? Guys,
Jay is saying 25 minutes. Oh, great. Exactly, exactly. Yes, yes. Many of you are giving the right answer. Sivan is saying 45 minutes. Okay. Okay. Now, majority of with the passage, with more and more practice, most of you will be able to complete your entire essay. I'm saying maximum number of minutes in hardly 30 to 35 minutes. मैं ये बताना चाहूंगा आप सिर्फ 30 या 35 मिनट में पूरा ऐसे लिख पाओगे, भले ही आप किसी भी स्टैंडर्ड से आते हो, वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम गुजराती मीडियम, English medium, wherever you are coming from. I would rather say that it usually takes 30-35 minutes to write the entire essay. बहुत इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो ऐसे केस में मेरी आपसे गुजारिश है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल कॉज है तो आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन पेपर पे लिखिए कि कॉज क्या है, कि भाई टू मेनी कार्स ऑन द रोड्स. ट्रैफिक कंजेशन का कॉज क्या है कि भाई बहुत सारे कार्स है. दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी नहीं है, रोड का लेआउट अच्छा नहीं है, रश आवर ट्रैफिक है, बहुत लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, I mean, at the same time lot of people are moving from here and there. So these are all the I mean, these are all the causes. Brainstorming के लिए I would recommend you spend at least 5 minutes. I recommend ये 5 मिनट में आप क्या कर सकते हो, you can read the essay topic. 5 से 7 मिनट आप इस्तेमाल कर सकते हो. You can read the essay topic for 3 to 4 times. आप पॉइंट्स जॉट डाउन कर सकते हैं, कॉज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और वो क्या भी आप लिख सकते हो विद इन अ स्पान ऑफ 4 to 5 मिनट्स. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू स्टूडेंट्स कि ये जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ उसको आप कीजिए. ये समझने में और सोचने में बड़े आसान लगता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से तो 100 में से 80% लोग नहीं करते और लिख के आ जाते हैं ऐसा जिसमें 5.5 बेंड आ जाते हैं. सो वेन एवर यू आर गेटिंग टाइम इन 5 मिनट्स ट्राई टू स्पेंड जॉटिंग द पॉइंट्स के कॉज क्या है, सॉल्यूशन क्या है और उसके रिलेटेड वोकैबुलरी. क्योंकि अगर आप जो भी कॉज यहाँ पे लेते हो उसके लिए वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. ओके. नाउ द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन उसका क्या है, कार शेयरिंग या पार्क एंड राइड स्कीम कर सकते हैं हम. कार शेयरिंग मतलब कार पूलिंग कर सकते हैं. पार्क एंड राइड स्कीम मतलब पार्क एंड राइड का मतलब क्या हुआ कि आप जहाँ पे पार्किंग लॉट है, जैसे कि ये सीजी रोड अहमदाबाद में हुआ है कि आप म्यूनसिपालिटी का कोई पार्किंग है वहां पे पार्क कर दो और वहां से गवर्नमेंट की जो गाड़ी जाती है वो आपको ऑफिस तक पहुंचाएगी, समथिंग लाइक दैट. ओके. कंजेशन चार्ज लगा सकते हो आप ताकि लोग, जैसे कि यूके में क्या है, लंदन में आप जाओगे तो इतना पैसा भरना पड़ता है, इतना पैसा भरना पड़ता है कि कोई प्राइवेट व्हीकल लेता ही नहीं है, इतना खर्चा है. या तो फिर आप सॉल्यूशन ये भी है कि यू कैन इंप्रूव योर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दो, क्वालिटी अच्छी कर दो. हमारी ईएमटीएस की बस से ज्यादा पहले ट्रैवल नहीं करते थे, लेकिन बीआरटीएस आ गया तो लोग ज्यादा थोड़ा ट्रैवल करना चालू हो गए. अब मेट्रो आएगी तो ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे बिकॉज इट इज मोर इट इज ऑफ बेटर क्वालिटी, मोर फ्रीक्वेंसी. इसलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हो, बस लेन साइकिल लेन अलग कर सकते हो, लोग साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, जैसे कि आई वेंट टू मलेशिया, I mean, and in many other European countries, वहाँ पे 2-3 स्लॉट्स में लोग काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं जो बता रहा हूँ, जो आपको चीज शेयर कर रहा हूँ, ये चीज सारी चीज आप एग्जाम में भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इन मेनी कंट्रीज, लेट मी टेल यू, डेवलप कंट्रीज 3 स्लॉट्स होते हैं टाइमिंग के. सुबह 6 से लेके फिर कुछ टाइम तक, फिर देन 10 से लेके फिर 12 से लेके, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि रिटेल आउटलेट है तो रिटेल आउटलेट को 10 बजे खोलने की जरूरत ही नहीं होती, वो 12 बजे ही खुलता है. They can even start at 3 to 4. लोग शॉपिंग करने सुबह 11 बजे थोड़ी चले जाते हैं. So that way you can also share the working hours. So what you need to do is you can always jot the points on the piece of paper. अब इतने सारे पॉइंट्स इसलिए लिखने हैं आपको, तो कभी कभार क्या होता है कि आपको ये पॉइंट लगता है कि ये अच्छा है, बट उसको गहराई से सोचेंगे तो लगता है यार इसमें पॉइंट्स नहीं मिल रहे मुझे, ये टॉपिक अच्छा है, ये एस्पेक्ट, बट आई एम नॉट एबल टू राइट मोर ऑन दैट. सो अगर आपने इतने सारे लिखे होंगे तो इट विल बी मेकिंग योर वर्क इजियर कि चलो इसमें पॉइंट्स नहीं मिल रहे तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द नेक्स्ट वन. ओके. नाउ जब आपने जॉट कर दिया, अब आपको सोचना है कि मैं कौन सा लूं. जैसे कि इस केस में टू मेनी कार्स ऑन द रोड, तो मैं वाई इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ पीपल ओन कार्स मोर कन्वीनियंट एंड देन बसेस एंड ट्रेन्स. तो मैं कॉज में ऐसा लिख रहा हूं कि ज्यादातर लोग अपनी खुद की कार्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है इन कंपैरिजन टू बस एंड ट्रेन्स. तो आगे की स्लाइड में जो मैंने पॉइंट्स लिखे तो उसमें से मैंने फर्स्ट पॉइंट को लिया है. आई कैन इवन टेक सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बट आई नीड टू टेक ओनली वन, सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन. ओके. अब सॉल्यूशन के लिए मैं क्या सोच रहा हूं, आई विल राइट के भी उसका सॉल्यूशन ये है कि पार्क एंड राइड स्कीम्स हो. नाउ आई नो दैट आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग्स इन माय एसे. So my introduction is going to be, first is going to be introduction. In the second paragraph, I am going to write that
ये इसका कॉज क्या है, in which I am going to mention that lot many people are having their own vehicles because it is more convenient, and in the solution part I am going to say that we can implement park and ride schemes. Any questions, any doubts, students? I have kept on speaking since quite long now. Yes guys, any questions? I hope you are understanding. Yes guys, please let me know. क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? यस, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड. ओके ओके ग्रेट. चलिए, ओके थैंक यू. नाउ लेट अस सी वोकैबुलरी. इसकी वोकैबुलरी करनी पड़ेगी. ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज क्विकली जॉट डाउन सम वोकैबुलरी दैट कम्स टू योर माइंड एज यू डिसाइड विच कॉज एंड सॉल्यूशन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट. सिनोनिम्स का देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट, जस्ट अ मिनट, वोकैबुलरी कहाँ चली गई? Okay, I mean the slide is not working anyway. Let us come again. Okay, now coming back to introduction. Start your introduction by paraphrasing the question. I'm sorry the vocabulary slide is not there, but we'll take it afterwards anyway. So first of all let us try to paraphrase the question. ये बहुत important है, काफी बच्चे ऐसा पूछते हैं कैसे करना है. चलिए, can you try paraphrasing students? One problem faced by almost every large city is traffic congestion. What do you think the causes are? What solutions can you suggest? So which part of the which part of the question you are supposed to paraphrase? This is the only thing that you are required to paraphrase. This is the only thing you are required to paraphrase. Just guess it out. अपने नोटबुक में लिखना चालू करो. आई एम नॉट, यू डोंट नीड टू शेयर इट टू, आई मीन आप शेयर कर सकते हो, लेकिन अपने नोटबुक में लिखो कि अगर इसका मुझे पैराफ्रेजिंग करना है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. इसी चीज को अलग अलग तरीके से लिखना है. कैसे लिखोगे? चलो लिखो, ट्राई कीजिए. This is the first line of your essay and is going to build up your wonderful impression. Please try. Okay, Jeet has written, traffic congestion is an emerging problem in almost every other metro cities around the globe. Globe का spelling wrong है Jeet, लेकिन it's fine. Okay, चलिए then. Yeah, I understood. चलो चलो ट्राई करो स्टूडेंट्स. आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई. इसी चीज को आपको अलग तरीके से लिखना है, वो आपका पैराफ्रेजिंग हुआ. एनी स्टूडेंट हु इज कमिंग फ्रॉम, या ट्रैफिक कंजेशन इज वन ऑफ द ग्रेट, वन ऑफ द लिखते हो ना तो वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स आएगा जय. ट्रैफिक कंजेशन इज one of the greatest problems confronted by most of the large cities. Okay, yes guys, you only two have tried nowadays. mean देखो, काफी बच्चे ये अयाज आप याद रखो कि जब आप कॉमा करते हो उसके बाद लोअर केस में लिखोगे. मेन क्यों कैपिटल कर दिया, उसको लोअर केस में कर दो. ओके, वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स. तो ओके नाउ सी ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. मैं देख रहा हूँ काफी लोग ऐसा कर रहे हैं. देखो यहाँ पे देखो, पहली बात, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. आप जब वन ऑफ द लिखते हो ना, आई इफ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी आएगा या सिटीज आएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी आएगा या सिटीज आएगा? इट इज गोइंग टू बी सिटीज. एंड मेनी ऑफ यू आर राइटिंग उसको प्लूरल कर दो. इट इज द बिगेस्ट सिटी आएगा. अगर सिर्फ मुझे ऐसा लिखना है, इट इज अ बिग सिटी, इट इज अ बिग सिटी. लेकिन अगर मैं वन ऑफ द लिखता हूं तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज. वो जरा ध्यान रखना. ओके, यस देन हु हैज गिवन? परमिंदर सिंह. ओके ग्रेट. हर्ष. ओके ओके ओके. All major cities. Okay, very good. Yeah, many of you are trying, and that is very good. Nowadays traffic congestion is faced by almost every. Very nice. It is undoubtedly true that the traffic congestion issue has increased. All very good, Rajeshri. Very nice. Chaliye. Okay. Thank you. So, yeah, Subhangi, the main issue is traffic congestion, which is faced by many youth cities. Okay, great. वेरी नाइस. यू पीपल आर ऑलमोस्ट नोइंग हाउ टू डू इट. कैसे करना है, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि उसी चीज को, बहुत सिंपल है, उसी चीज को आपको अपने तरीके से लिखना है. सो दिस इज हाउ वी हैव रिटन. Paraphrase. One of the most serious issues facing the majority of large urban areas is traffic jams. Let me tell you, यही तरीका है वो इम्पोर्टेंट, यही तरीका है सही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से लिखा है. आई एम सो हैप्पी. डोंट वरी. ओके, देन note my use of synonyms to replace keywords in the question statement. You don't have to replace every keyword, but you do so where possible while ensuring that your language sounds natural. Clear? So this is the first line of your essay. बहुत important है. Now the thesis statement.
दूसरा स्टेटमेंट, ये थीसिस स्टेटमेंट सर काफी लोग पूछते हैं सर थीसिस स्टेटमेंट, मैं सिंपल कह दूं दूसरा स्टेटमेंट, क्लियर, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ योर इंट्रोडक्शन. नाउ वी नीड टू ऐड एन आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट दैट, जिसमें आप दो पॉइंट जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. तो जैसे कि कॉज में क्या है हमने सोचा था, वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट बहुत सारी कार्स है उसके लिए, क्योंकि लोग बहुत कार्स खुद की खरीदते हैं, और हमने उस बोला था उसका सॉल्यूशन पार्क एंड राइड स्कीम्स. तो देखिए हम उसको कैसे डेवलप करेंगे. दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ योर एसे. द मेन रीजन फॉर दिस is that there are too many private cars on the roads these days, and a viable solution is to introduce more park and ride schemes. ये आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन का दूसरी लाइन हुई. The first line was paraphrasing of the introductory statement and this is the thesis statement. इन दोनों को मिला के हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन. Any questions, any doubts, all of you? शांति से देख लो गाइस. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? क्लियर हो गया आपका पूरा कंसेप्ट? यस और नो? क्लियर. याद रखना है आपको कि तीसरे स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम जो है और सॉल्यूशन जो है उसको स्टेट करना अनिवार्य है. यू नीड टू स्टेट द प्रॉब्लम एंड यू ऑल्सो नीड टू स्टेट द सॉल्यूशन. आप, मैंने काफी बच्चों को ऐसा लिखा है, इन दिस ऐसे आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम फॉलोड बाय सॉल्यूशन. ऐसा नहीं चलेगा. आई रिपीट, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स राइटिंग दिस वे. दिस ऐसे इज गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द प्रॉब्लम एंड देन फॉलोड बाय द सॉल्यूशन. ऐसा नहीं कर सकते आप. आपको लिखना पड़ेगा. यू नीड टू स्टेट योर प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन. क्लियर? No, there is no need to do that, Vitan. Don't worry. Okay, it's there for everybody. Okay. Siddharth, it is fine. Yeah, it's good. Okay, great. Yeah. Okay, now coming back to introduction, we are running out of time क्योंकि मुझे दो चीज और भी लेनी है, very important. No, Jarul, don't do that. Okay, now अब आपका आएगा फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, लिसन टू दिस. अब आपका सेकंड पैरा स्टार्ट होता है तो पहला सेंटेंस क्या होगा? टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस क्लैरिटी देगा एग्जामिनर को कि ये बंदे का प्रॉब्लम कॉज क्या लिखने वाला है. सो प्लीज मेक श्योर दैट इसमें गोल गोल घुमाने की या जनरल स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. इन द टॉपिक सेंटेंस, दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ, यू नीड टू स्ट्रेट अवे से कि आपका कॉज क्या है. तो यहाँ पे लिखा है एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज that the number of people owning cars increases year on year, with most families now having more than one car. Is it getting clear everybody? Yes or no? Understood? So ये मैंने टॉपिक सेंटेंस में मैंने काफी लोग देखे कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, दे आर नॉट एबल टू राइट टॉपिक सेंटेंस क्लियरली. टॉपिक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटा लिखो बड़ा लिखो, लेकिन जो भी करना है उसको क्लैरिटी होनी चाहिए. आपका एग्जामिनर 10-15-20 सेकंड से ज्यादा चेक नहीं करने वाला है ऐसे. तो टॉपिक सेंटेंस देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि भैया ये है. क्लियर? सो दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस. अब उसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ. एक्सप्लेनेशन सेंटेंस. देखिए टॉपिक सेंटेंस क्या था, याद रहेगा. एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्यों लोगों के पास ज्यादा कार परचेज हो रही है, और मोस्ट फैमिलीज नाउ हैविंग मोर देन वन कार, बहुत कार्स लोगों के पास हो गई है. अब उसका ये कारण, दिस इज बिकॉज, कोई नया आइडिया नहीं दे रहा हूं मैं, उसी आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज बिकॉज मोस्ट पीपल लाइक द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलिंग एट द टाइम दे वांट टू रादर, sorry, this is because most people like the convenience of traveling at the time they want to rather than being restricted to public transportation timetables. So they prefer to drive themselves around rather than taking the bus or train. ज्यादातर लोगों को खुद अपनी कन्वीनियंस पे कार चलाना अच्छा लगता है. उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टाइम टेबल पे निर्भर रहना अच्छा नहीं लगता, और उनको ये पसंद है कि अपने हिसाब से कहीं पे ट्रैवल कर सके रादर देन टेकिंग द बस और ट्रेन. तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हुआ ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ 1. ओके, एंड फाइनली दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय एन एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस, whenever I have to attend, मैंने पहले भी बताया था, एग्जाम्पल अगर नहीं सूझ रहा है तो you can make your example from your own experience, that is fine. For instance, whenever I have to attend a meeting in the city, इसको अगर और करना है तो आप ऐसा कह सकते हो, you can make this मेरे आप ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल लगना है, फॉर्मल करना है तो आप ऐसा कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस,
मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन माई सिटी, मैंने आई किया है, उसके बदले अगर ज्यादा फॉर्मल करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन माई सिटी, if they want to attend a meeting, they drive because it means that they can leave home when they want to rather than getting stressed about getting to the station to time to catch the train. Are you getting what I am trying to say? क्लियर हुआ मैं क्या बता रहा हूँ? आई नहीं लिखना है आपको, तो लोगों पे कर सकते हो कि मेरी सिटी में ऐसा करते हैं, या तो फिर मेरी कंपनी में लोग ऐसा करते हैं, तो क्या होगा, आपका पर्सनल एग्जांपल भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा इनफॉर्मल भी नहीं लगेगा, और अगर आपके पास नहीं दिमाग में आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन माई 50% of 70% of the staff members working in my company prefer to use cars. ऐसे करके आप एग्जांपल दे सकते हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? रादर देन राइटिंग आई. आई थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है. एनी क्वेश्चंस? एनी आई में लो बैंड नहीं है, लेकिन इट इज मोर इनफॉर्मल. आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर फॉर्मल थिंग्स. क्लियर? ओके. देन द सेकंड पैराग्राफ स्टूडेंट्स, ये सेकंड पैराग्राफ है, ये पूरा एक हो गया. आई मीन सॉरी, ये बॉडी पैराग्राफ पूरा एक हो गया, तीनों तीन सेंटेंस इकट्ठा करके. देन कम्स द सॉल्यूशन पार्ट. याद है ना? तो सॉल्यूशन का पहला याद है, सॉल्यूशन कौन सा था? पार्क एंड राइड स्कीम्स. तो वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम that is proving successful in many areas is park and ride schemes. आपको पता चल रहा है ये टॉपिक सेंटेंस कितना क्लियर है? मैं सब लोगों को मैं चाहूंगा कि when you write an essay and show it to me, please make sure that your topic sentence is damn clear. पहला जो टॉपिक सेंटेंस था पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ 1 का, वो भी बहुत क्लियर था कि ये उसका कॉज है. वैसे ही इन दिस सॉल्यूशन, टॉपिक सेंटेंस शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट दिस इज गोइंग टू बी योर सॉल्यूशन, पार्क एंड राइड स्कीम. अब उसका एक्सप्लेनेशन. It would be a good idea if you park your car for free in a large car park on the outskirts of the city and take a bus for the final part of your journey. The fee you have to pay for the bus trip is usually very small, and the public transport system is generally very regular, running every 10 minutes or so. इसका कारण ये है, क्यों कार एंड पार्क को हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे सॉल्यूशन के हिसाब से, कि आप अपनी कार, अगर फर्स्ट करो सबर्बन एरियाज में रहते हो, तो आप अपनी कार जो है वो पार्किंग में, सिटी के जो मेन आउटस्कर्ट्स में जो पार्किंग है वहां पे पार्क कर दो. और सिटी के अंदर तो बसेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती ही है, और वहां से आपको काफी बसेस अपने हिसाब से मिल जाएगी, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन सेंटेंस, एंड नाउ दिस इज द एग्जाम्पल. अब मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि देयर इज नो नीड टू गिव एग्जांपल्स इन बोथ द केसेस. आप नहीं देना चाहते तो चलेगा, लेकिन एक ऐसे में एक एग्जांपल होना अनिवार्य है. You might not want to give two examples, but even if you want to give one example, it is fine. ऐसे केस में ये जो तीसरा सेंटेंस होगा वो वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. You can write one more sentence. It may or may not be an example, but I request you to write at least one example in your essay. For instance, a survey carried out in the city of Exeter showed that the rush hour congestion decreased by 10%. I repeat, सर्वे किया गया था सिटी ऑफ एक्सिटर में, रश आवर के कंजेशन में, तो देखा गया कि वो 10% कम हो गया है जब when the council set up park and ride scheme to the north of the city. सिटी के नॉर्थ में जब ये स्कीम का उन्होंने इस्तेमाल किया. There was an additional drop of another 10% in traffic volume when a second scheme began operating to the south. पहले जब नॉर्थ में ये कार पार्क की स्कीम इस्तेमाल की तब 10% कम हुआ, और साउथ में जब इस स्कीम का इस्तेमाल हुआ तभी भी 10% कम हुआ. तो दिस इज एन एग्जाम्पल. ये तीनों तीन मिला के हो जाएगा आपका पूरा बॉडी पैराग्राफ 3. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? आई होप इट इज क्लियर. यस गाइस, एनी क्वेश्चंस? अंडरस्टूड एवरीबडी? Very good. Okay, no issues. The entire recording is going to be given to you, so you can go through it again. Don't worry. But I am trying to make sure that I go slow so that it is very you understand it precisely. Okay. Yeah. Now the solution part. Sorry, the conclusion part. अब देखिए conclusion के लिए मैं चाहूंगा, मैं सबको ये कहूंगा, for example. Okay. Now the conclusion is जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि बाहर लोग वहां पे क्या करते हैं, लोग बहुत दूर रहते हैं, तो वहां से बस की बात, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है. जब आप वहां तक आ जाते हो, सिटी तक आ जाते हो, देन यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. दैट्स द रीजन. ओके. एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट.
Okay, now this is the conclusion. You can start the conclusion from like this. In conclusion, to conclude. अब मैं सबको ये चीज कहना चाहूंगा कि जब आप कंक्लूजन लिखते हो तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको. आपका इंट्रोडक्शन जो है उसको वापस देख लो. यू रीड योर इंट्रोडक्शन प्रॉपरली एंड उसी इंट्रोडक्शन को वापस दोहराना है. देखिए अब मैंने कंक्लूजन लिखा है. आप दोनों चीजों को देख लो. ऊपर इंट्रोडक्शन है और नीचे कंक्लूजन है. जस्ट गेट चेक इट आउट. दे बोथ आर द सेम थिंग्स but in different language. I recommend you people to read it properly. Let me know when you are done. Very, very important. Is it clear? Very good. आप वही कर रहे हो कंक्लूजन. ये इसलिए इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है क्योंकि आप कंक्लूजन में यू डोंट गो आई मीन यू डोंट राइट समथिंग डिफरेंट. So that is the reason, basically conclusion is restating of the same thing. I repeat, conclusion is about all restating of the same thing. Yeah, you may or you may not want to write Krishna. That's fine. That's fine. ये अगर आपको लिखना नहीं है तो चलेगा. You would certainly use one if it is introduced in my area. वो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा. Not an issue. Okay. Clear, everybody? Shall I move on to the next slide now? This is very important. Okay, ये आपका conclusion हुआ. Now I am going to give you the format. I would want you people to understand this. मैंने है ना पहले format दिया था लेकिन problems and solution का ही दिया था. आप इस चीज को जरा गौर से देखिए. I am giving you format of all the three types of essays, that is cause and solution, problem and solution और सिर्फ solution. तो मैं आपको इसका format दे रहा हूँ. आपको इसको ठीक से देखिए. You can write if you want, Rutant. That's fine. Yeah, you can write a statement, a generalized statement लिख सकते हो और बाद में you can write the conclusion. Okay. Now, don't give any new idea in conclusion. No, let me tell you, Hina, don't give any new idea in conclusion. इसी के लिए तो मैं बता रहा हूं कि आपको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा और बाद में कंक्लूजन देखो. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, दिस इज द फॉर्मेट. अगर आपका कॉज एंड सॉल्यूशन वाला ऐसे तो आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो. जस्ट गो थ्रू दिस, शांति से रीड कर लो. आई वांट यू पीपल टू रीड इट आउट प्रॉपर्ली. आई एम नॉट गोइंग टू रीड. You can also take a screenshot if you want. Let me know if you are done. आपने पढ़ लिया तो मुझे बताना. ये कॉज एंड सॉल्यूशन कैसे आता है तब आप इसका इस्तेमाल करोगे, कर सकते हो रादर. Done, students? Very important. Yes, Ivani. Okay. Now this is the format for a problem and solution essay. ये फॉर्मेट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला है. Go through it. शांति से देख लो. अगर आप if yeah, you can utilize, but you should be utilizing it in proper manner so that they don't it does not appear that it is memorized. Let me tell you. एग्जाम्पल आप दोनों तरफ लिखना जरूरी नहीं है सिद्धार्थ. छोड़ दोगे, एक में नहीं लिखोगे तो चलेगा. एटलीस्ट एक एग्जाम्पल होगा तो चलेगा. दो लिख सकते हो. यू कैन राइट टू एग्जाम्पल्स बट देयर इज नो नेसेसिटी. एटलीस्ट वन एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. यू कैन राइट टू एग्जाम्पल्स अदरवाइज. गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट कंपल्सरी. या हो गया ये? अंडरस्टूड. आई एम नाउ गोइंग टू शो यू द थर्ड फॉर्मेट. पहला फॉर्मेट था वो कॉज एंड सॉल्यूशन का था. दूसरा है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. एंड देन दिस इज द थर्ड फॉर्मेट, ओनली सॉल्यूशन. अगर कोई ऐसा ऐसे आता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देने हैं तो आप ये कर सकते हो. देखो मैंने ऊपर सब कुछ लिख दिया है.
You need to write in the thesis statement the primary solution to this problem may be 2 dash and the secondary one that can be applied is, and then problem number 1, sorry, solution number 1, solution number 2, and finally conclusion. You can make changes according to you, students. It's not that, but इससे आपको idea मिल जाएगा. You won't get stuck in the examination. Clear? क्लियर, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं. आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस. देखिए अब ये बताओ मुझे क्या है, पढ़ के बताओ क्या है, गेस कीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, इसमें 4 बॉडी पैराग्राफ है, सॉरी 4 ही बॉडी पैराग्राफ, टोटल 4 ही पैराग्राफ है नियति. अच्छा मीरल, आपको स्लाइड वापस देखनी है? जस्ट अ मिनट, somebody wants to go through. Yeah, the previous slide. Yeah, is it done, Miral? Students, anyhow you are going to get this tomorrow, don't worry. The previous one, okay. चलिए students, do it faster please guys. हो गया ये? This is problem solution. Okay, then this is solution, one solution. Okay, now this is very important students. अब ऐसा नहीं है कि आप 2 प्रॉब्लम और 2 सॉल्यूशन नहीं दे सकते. ये आप ध्यान से देखो, काफी बच्चे मुझे ऐसा पूछते हैं कि सर क्या मैं 2 प्रॉब्लम और 2 सॉल्यूशन नहीं दे सकता? यू कैन गिव 2 प्रॉब्लम्स एंड 2 सॉल्यूशन. तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा? देखो यहाँ पे होगा, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज फेस्ड और जो भी है, 2 मेजर प्रॉब्लम्स दैट हैव रिजल्टेड फ्रॉम दिस इश्यू आर, 2 यहाँ पे लिखोगे, एंड इट कैन बी टैकल्ड बाय इफेक्टिव सॉल्यूशंस लाइक दिस एंड दिस. क्लियर? ये इंट्रोडक्शन है. अब आपको क्या करना पड़ेगा? मेक श्योर व्हेन यू आर राइटिंग 2 प्रॉब्लम एंड 2 सॉल्यूशन, you need to write problem and solution in one paragraph only, because if you write problem and solution in different paragraphs you will be ending up in writing 6 paragraphs. वो मैं नहीं चाहूंगा आप ऐसा करो. तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? in the second paragraph state a problem, 2 लाइन लिखोगे, पहला टॉपिक प्रॉब्लम को लिखोगे, उसका एक्सप्लेनेशन करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन दोगे, उसका एक्सप्लेनेशन करोगे. वैसे ही यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम, उसका एक्सप्लेनेशन, दूसरा सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन. अब आप पूछोगे एग्जांपल सब कहाँ पे आएगा? जो चौथी लाइन है या तो फिर जो दूसरी लाइन है, कभी कभार एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे तो चलेगा, स्ट्रेट अवे गिव द एग्जांपल, जैसे दैट इज आल्सो फाइन. सो देयर इज नथिंग टू वरी. तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट टू राइट 2 प्रॉब्लम एंड 2 सॉल्यूशन. याद रखना है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग पैराग्राफ में नहीं होंगे, उसी पैराग्राफ में प्रॉब्लम सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ जाएगा. I hope this is clear to you. This is also fine. You can also follow this format if you want to write 2 problems and 2 solutions. Any questions, any doubts? बोलिए. Understood what I'm trying to say? Example तो लेना ही पड़ेगा. Example तो किसी में भी आएगा, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा. Yes, Jeet, write the statement, question. પણ વધારે કોમ્પ્લિકેશન છોકરાઓ ના કરવો. if you don't want to go with too many complications you can always follow the previous formats, don't worry. Clear? Okay, any questions, any doubts guys? Yeah, you can give this example. Yes, Akanksha, yes, you can do that. Okay, done. No, that is wrong, Jeet. That is wrong. That's wrong, Jeet. You should, अगर आप extend नहीं करते तो नहीं चलेगा. And this is not, see, अगर काफी लोग ऐसा बोलते हैं सर मैंने काफी ऐसे, see all of you people are वो मकर करते हो, लेकिन मकर की जो ऐसे की बुक होती है इतनी खराब उसने लिखी हुई है, she has not been able to explain anything.
So I would strongly recommend that don't follow any other thing. एक्सटेंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्सटेंडेड आइडियाज देने पड़ेंगे. IELTS की बैंड डिस्क्रिप्टर्स में लिखा है कि यू नीड टू एक्सप्लेन योर आइडियाज बाय गिविंग प्रॉपर रीजनिंग एंड एग्जांपल्स. तो ये मेरा ये रूल नहीं है. दिस इज द रूल ऑफ द ब्रिटिश हाई कमीशन. क्लियर? ओके. Okay, shall we discontinue now? It is basically getting strenuous for me. So can we discontinue the lecture now, students? I hope it is understood. Yeah, it's wrong, Sushant. Yeah, you are right. Makar is wrong. Yeah, it's good, Shivani. Thank you. Thank you so much, students. Thank you so much, for I hope this lecture was helpful to you. पता चल गया आपको? Simple सा है. वापस करेंगे. If you go through it properly, ये format को देख लेना. You'll get to know. Thank you, Jay. Thank you, students. I hope you enjoyed the lecture. Okay. Good night, students. Thank you.